So, ladies and gentlemen, we have Shri Prakash Javadekar, MP, former Cabinet Minister for INB, Environment and Heavy Industries. You are with us, तो आइए जोरदार तालियों से सर का स्वागत करते हैं. Everybody, let's have a thunderstorm round of applause. लेकिन उससे पहले we'll do the lighting of lamp. We do the lighting of lamp, sir, first. सज्जनों की जब भी हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमेशा भगवान के नाम से की जाती है, तो बिल्कुल आज भी हम वैसा ही करेंगे. इस शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे भगवान का नाम लेकर, और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरः गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो आइए इस शाम की शुरुआत करते हैं. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for all the esteemed guests, for the dignitaries standing here amongst all of us. Can we have a huge round of applause? And now I request मैं सबसे पहले डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुले जी, IFS रिटायर्ड मेंबर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जी से रिक्वेस्ट करूंगी सर, वार्म वेलकम, कि हमारे बीच में मंत्री जी हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनको सम्मानित किया जाए एक बुके और शॉल से. सर आपका स्वागत है तहे दिल से. वेरी वेरी वार्म वेलकम. एंड नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर S.N. Prasad ji, MD Kiran Group of Companies, to felicitate Shri D.M. Mulay sir with a bouquet and shawl. I request Ashu Gupta, Director Kiran Publications, to present a bouquet and shawl to Chief Justice M Kumar ji, sitting here. Very warm welcome, sir. Moving on to the next person, I'd like to call Dr. Ankur Gupta, Director, Kiran Institute of Career Excellence, ji, to present the bouquet and shawl to Dr. S.M. Kantikar ji. Renu Shah, Director, Kiran Institute of Career Excellence, to kindly present a bouquet and a shawl to Dr. Sadhna Shanker ma'am. Sanket Shah, Director, Kiran Institute of Career Excellence, to present a bouquet and shawl to Rajat Kapoor ji. Srimati Neha Shah, Director, Kiran Institute of Career Excellence, to present a bouquet and a shawl to Dr. Sangeeta Verma ji. And launch of free coaching material for UPSC Aspirants. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप I'd like to thank each one of you for taking out your precious time and joining us here, ladies and gentlemen. Let's have a big round of applause for everyone present. Okay, so आगे बढ़ते हैं और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी, इनफैक्ट वो ऑलरेडी यहाँ पे हैं. So ladies and gentlemen, let's put our hands together and welcome Shri Rajat Kapoor, MD, Indian Diaspora Club, to kindly say a few words for all of us sitting here. Thank you. Thank you. Thank you, Vani. Good evening, ladies and gentlemen. Free coaching for young UPSC aspirants. This evening is special for all of us, as we have with us former Cabinet Minister for Information and Broadcasting, Environment and Heavy Industries, Shri Prakash Javadekar ji as Chief Guest, and Shri V. Muraleedharan ji, Minister of State for External Affairs, as Guest of Honor. Welcome, sirs. I would also like to welcome Justice Shri M Kumar ji, who is currently Member, National Human Rights Commission. Welcome, sir. Then I'll welcome Dr. S.M. Kantikar, Member, National Consumer Dispute Redressal Commission, sir. Then Dr. Sangeeta Verma, Member, Competition Commission of India. Then I welcome Dr. Sadhna Shanker, ma'am, IRS Principal Director General, Legal and Research, New Delhi. Thank you, sir and ma'am, for gracing this occasion. Further,
A very warm welcome to my mentor, the passport man of India, Dr. Dnyaneshwar Mulay, currently member of National Human Rights Commission, and special guest for this evening, Shri Ankur Meshram Danex and Piyush Rohankar Danex. Just a quick description about Indian Diaspora Club. It was formed in 2014 with an aim to form and foster a sense of oneness among Indian diaspora. Indian Diaspora Club felicitate the PIO and NRI, connect them to Indian diaspora, organize their visit to motherland for any professional mission, and connect them with the right people of the right purpose. In India and abroad, Indian Diaspora Club endeavors to connect this country with Indian diaspora across the globe. Today, we take a pleasure to support the underprivileged yet deserving aspirants who wish to become an IAS by cracking the UPSC exams. Let me just take few moments of yours to tell you how this idea of free coaching originated and what we have done so far for these young aspirants. Mr. S.N. Prasad and Mr. Sanket Shah, who are the directors of well-known Kiran publications and pioneer in the field of education, approached me with the idea of working together towards a noble cause. I could only think of my mentor, Dr. Mulay, who has been unconditionally supportive and been my pillars of strength. Ladies and gentlemen, let me tell you this one thing about him. No matter how occupied he is with his commitment and his duties, he always takes out time to support the noble cause. Dr. Mulay advised me to offer free coaching to the UPSC aspirants who, though they were deserving, but because of lack of resources, could not come forward and service the nation. It was then decided to implement this idea in Maharashtra, to start with and then to extend to different parts of India. Approx 400 aspirants covering districts of Satara, Sangli, Ichkalkaranji, and Thane, etc. were imparted free coaching for 3 months for all subjects of UPSC examination. Interactive online classes were conducted, and the best scholar and professor were brought on board for teaching. You can imagine how thrilled these students were. Their feedback was taken, and currently the syllabus is under revision basis their inputs. Today, all these students are ready to crack the UPSC exam with the enthusiasm and confidence. We take pride in announcing that we are also providing them study material which is free of cost. This will make them more confident in competing with other fellow aspirants. The subjects for which the free study material will be provided for geography, history, polity, science, and economics. We hope to continue and more states and more aspirants in the near future. Without taking much time, I would like to sincerely thank Dr. Mulay and S.N. Prasad Shah for supporting this initiative and guiding me and selflessly helping the one who are deserving, but because of lack of resources could not come on forefront. Please let's all give a big round of applause of them. I would like to hand over the mic to Mr. Vinayak Katyal, requesting him to enlighten us all on the challenges being faced by UPSC aspirants, which is though, and I would also say, rather toughest for those who observe to be an IS, but because of lack of resources, haven't to compromise their dreams. Thanks once again, all of you, from the core of my heart. Namaskar. Thank you. First of all,
I would like to thank Rajat Kapoor sir for giving me this wonderful opportunity to express myself before everyone. It's a great honor to be with you, sir. Myself, Vinayak Ravindra Kutwal. I belong to Maharashtra. Today I'll be sharing my life journey till now with you all. I was 2 years old when I lost my father, as he was a rickshaw driver. I lost him in an accident. After then, my maternal family helped me a lot, and my mother. In 2006, my mother got an opportunity to work as an ASHA worker and to contribute something for the betterment of the society, wherein I came to know about the ground realities and the various problems faced by the rural people in the health and the education sector. But unfortunately, in 2018, she met with a paralysis attack in which she lost half of her body, and even she lost the ability to speak. So she now can't even speak. But then, witnessing all these problematic situations and dealing them courageously, I was strongly motivated with a burning desire to pursue higher education and to do something meaningful and purposeful for the public. I did my mechanical engineering from Padma Bhushan Vasantdada Patil Institute of Technology in Pune in 2020. So during my last year of graduation, that is pandemic year, I realized that civil services is one of the best platform wherein I'll get immense opportunities to work for the people day in and day out and to serve the purpose of my life. But then I was in dilemma from where to get this education, from where to get such kind of education and guidance. Then I was delighted to know about respected Dnyaneshwar Mulay sir and the entire team they carry and the support they give. So sir, the way you teach, the way you guide, the way you motivate us is really inspiring and commendable. We all are blessed to have you in our life. And sir, on this auspicious day, I would like to assure you that we all will follow your footsteps in our future and will make you and whole nation proud with our works. Last but not the least, I would like to take a pause with a small quote in front of you. Here it is. इन हसरतों से कह दो कि कहीं और जा बसे, इतनी जगह नहीं है दिले दाकदार में. उम्रे दराज मांग कर आए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए और 2 इंतज़ार में. Thank you very much. Mr. Kotwal, you were beautiful, really. Thank you so much for taking out time all the way from Maharashtra and joining us here. एक बार जोरदार तालियां बनती हैं श्री विनायक रविंद्र कोटवाल के लिए. Thank you once again. And now, ladies and gentlemen, I'd like to call upon our special guests, ladies and gentlemen, who've joined us here for this auspicious evening, Dr. Sangeeta Verma, Member, Competition Commission of India. So let's put our hands together and welcome ma'am here on the podium. I request ma'am to say a few words for all of us here. एक बार फिर से स्वागत है मैम आपका. Thank you very much. My Prasad Sahab, Mulay Sahab, Justice Sharma ji, Sadhna Shanker ji, and Mr. Rajat Kapoor. बहुत ही शुभ दिन आज का चुना है डायस्पोरा इंडियन डायस्पोरा क्लब ने इस शुभ शुरुआत के लिए. आज बसंत पंचमी है, जबकि पूरा वातावरण, धरती, जग प्रफुल्लित होता है. और आज है सरस्वती पूजा, जो कि इस कार्य के लिए इससे ज़्यादा सुंदर और ऑस्पिशियस शायद वक्त नहीं चुना जा सकता था. मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी इस पूरे आयोजन को, इस पूरी इनिशिएटिव को और इससे जुड़े हुए सभी लोगों को कि उन्होंने इस बेहद आवश्यक ज़रूरत को पहचाना और उसे पूरा करने का प्रयास, पूरा न केवल प्रयास किया, उसे मुकाम तक पहुंचा पाए हैं. मैं मिस्टर विनायक कोतवाल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी हिम्मत से अपने
एडवर्सिटीज़ को फेस किया और उन एडवर्सिटीज़ से उभर के और हम लोगों के समक्ष आज आके हम सबको इंस्पायर करके गए हैं. With this, I would wish this day and the organization and the muhim that they are carrying forward all the very best. My best wishes. Thank you. Thank you so much, ma'am. Let's have a huge round of applause once again for Dr. Sangeeta Verma. Thank you once again, ma'am. And now, ladies and gentlemen, it's time for the releasing of the books and distribution of the books, of course, to all the students present here. So, I request all the students to kindly join us here on the dais, and requesting Shri Prakash Javadekar ji to kindly hand over the books to the students. Requesting Dr. Dnyaneshwar Mulay ji, of course, to hand over the books to the students. And call all the students on the front row. I request all the students to kindly step forward and join us here, right ahead the dais. सभी स्टूडेंट्स से दरख्वास्त है, प्लीज आ जाएं. Lamp side. ओमकार विष्णु सलोंक, शंकर कुंडलिक जादव, we have Saurabh Bharat Jadhav, we have Dhananjay Navnath, we have Sumit Kakarwal, Praveen Shinde, we have Rajesh Bonawate, we have Akshay Gagre. Requesting all of you to kindly join us here. First phase of 22 students, requesting all of you to join us here. For all the superstars and real champions present here. हमने तो सुना था कि सितारे सिर्फ आसमान में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आज सारे चमकते सितारे हमारे बीच में हैं, तो सभी चमकते सितारों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. Thank you everybody. Thanking all the students for joining us here. For the special address, ladies and gentlemen. And now we'll be calling upon the passport man of India, ladies and gentlemen, Dr. Dnyaneshwar Mulay, IFS retired member, National Human Rights Commission. Ladies and gentlemen, sir, इससे पहले कि मैं आपको बुलाऊं, थोड़ा सा आपके बारे में बोलना चाहूंगी, अगर आपकी permissions हैं तो. Yes, of course. Dr. Mulay served as a diplomat in the Indian Foreign Service from 1983 to 2019. He is a renowned author, motivator, and former secretary to the Government of India, ladies and gentlemen. He is joined as member, National Human Rights Commission, India, on 25th April 2019. Secretary CPV and OIA, Ministry of External Affairs, New Delhi, till year 2019. Under his leadership, 410 new passport offices were opened in the country as a part of taking passport office to every Lok Sabha constituency. तो मुझे लगता है इतना बहुत है सर के बारे में बोलना, सभी लोग उनको जानते हैं. Ladies and gentlemen, put your hands together and we welcome Dr. Dnyaneshwar Mulay sir. स्वागत है सर एक बार फिर से आपका. आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. जिनको किताबें मिली और जिनको नहीं मिली उनको भी मिल जाएगी. आज के हमारे अध्यक्ष महोदय, मैं हिंदी में इसलिए बोलना चाहता हूं कि जहां तक हो सके मैं चाहता हूं हमेशा कि हम अपनी भाषाओं में बोले. अंग्रेज़ी भी हमारी ही भाषा है, तो लेकिन भारतीय भाषाओं में बोलने का एक मज़ा कुछ और ही है. मैं मराठी में बोलना चाहूँगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 25% लोग हैं शायद मराठी, बाकी हिंदी जो है हमारे दिल के करीब है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदी में ही बात करूँ.
बीच में थोड़ी अंग्रेज़ी आ जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना, वो भी अपनी ही भाषा है। आज के हमारे प्रमुख अतिथि और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, मेरे मानवाधिकार आयोग में मेरे सहयोगी सदस्य जस्टिस M कुमार जी, कंज्यूमर अफेयर्स में मेंबर है हमारे डॉक्टर SM कांतिकर जी, डॉक्टर साधना शंकर, डॉक्टर संगीता वर्मा, काफ़ी सारे डॉक्टर हैं यहाँ, किसी के भी हाथ में स्टेथोस्कोप नहीं है, लेकिन अच्छा है कोविड के टाइम। और इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने किया है, संस्कृत में कहा जाता है कि योजकस तत्र दुर्लभा, the one who really makes arrangements and coordinates, that's a difficult job. It's easy to stay in separate parts, but सबको इकट्ठा करने का एक अपना जो मज़ा है, वो सबको लुत्फ जो है आज शाम का देने वाले हमारे रजत जी है। मिस्टर प्रसाद है जो कि इस कार्यक्रम के आधार स्तंभ है, संकेत शाह जी है, उन्होंने और प्रसाद साहब ने आज की इस शाम को जो है इतना बढ़िया बना दिया है। और हम सोचेंगे कि किताबें दे दी है, अब क्या इसमें क्या विशेष बात है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, ये एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस विषय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की हमें चर्चा वैसे करनी चाहिए। हमारी जो भारतीय नागरिक सेवा स्पर्धा परीक्षा है, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन UPSC जिसको हम कहते हैं, IAS बनाती है लोगों को, IPS बनाती है, IRS बनाती है और न जाने क्या क्या बनाती है। तो ये दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। Why have we made it so difficult? इसका कोई आसान तरीका नहीं है। अगर आपके यहाँ 10 लाख उम्मीदवार हर साल इसके लिए बैठते हैं, उसमें से सिर्फ 800 लोग चुने जाते हैं, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 100-150 ही IAS में चले जाते हैं, तो आप कितने प्रतिशत लोग यशस्वी हो जाते हैं इसका गणित लगा सकते हैं। 0.1%। अगर 100 लोग हैं तो 1/10, पता नहीं एक बंदे का 1/10 कैसे करना होता है, 100 लोग परीक्षा में बैठते हैं तो 1/10 कैंडिडेट्स गेट सॉर्ट ऑफ इन। उसमें भी अगर IAS का आप लगा दें तो फिर पता नहीं 150th आ जाएगा या 100th आ जाएगा। इसमें होता यह है कि पूरे भारत से हमारा टॉप टैलेंट जो है इस परीक्षा में आ जाता है और इसमें 99% जो है ऑलमोस्ट जो है निराश होके चले जाते हैं। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके बारे में हमें सोचना है कि aren't we ready to reorient ourselves to nation building in new fashion after 75 years of our country's independence? ये सोचने वाली बड़ी बात है इसमें। लेकिन चलो ये भी एक कभी हम सोचेंगे और सोचना चाहिए, क्योंकि आज ज्ञान की इतनी शाखाएं खुली है, मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग है, क्लोनिंग है, क्या नहीं है। आप तो सोशल मीडिया और बाकी तो आप स्टडी करते हैं। 75 साल में इस देश ने एक भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक भी नोबेल प्राइज अवार्ड विनर नहीं बनाया है। उसके पहले CV रमन थे स्वतंत्र पूर्व काल में। मुझे लगता है कि बहुत सोचने की ज़रूरत है कि जिस तरह से हम अपने युवा वर्ग को आगे जाने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्या उसमें कुछ नुक्स है, क्या कुछ उसमें कुछ कमी है, ये भी सोचना है इस संदर्भ में। ये किताबें जो बनी हैं वो इनका एक अपना महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है कि जैसे हमने महाराष्ट्र का, मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र का उदाहरण आपको देता हूँ। महाराष्ट्र से करीबन 7,000 से 10,000 उम्मीदवार जो अध्ययन करने के लिए, इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए, आफ्टर डूइंग मास्टर्स, आफ्टर डूइंग डॉक्टरेट, आफ्टर डूइंग IIT, IIM, वो यहाँ पर पहुँचते। और उसके बाद क्या करते हैं कि राजेंद्र नगर में, करोल बाग में, कहीं और ऐसी जगह जो है
दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास, वहाँ बैठ के एक छोटे से खोखे में, कबूतर खाने में बैठ के वो 2-2, 3-3 साल स्टडी करता है। 50% से ज़्यादा, more than 50% candidates want to take chance after losing thrice, after failing thrice. Or more than 50% want to take after even, more than 30% want to take them after even failing 5 times. मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे युवा वर्ग के अपने युवा समय के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष जो है, इसमें हम लोग जो है रफा दफा कर रहे हैं। क्या ये भविष्य में जो देश एक महासत्ता बनना चाहता है, क्या इस तरह से हम अपने युवा लोगों का समय जो है बर्बाद करना चाहते हैं? एक प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे लगता है कि 75 साल के बाद एक बहुत अच्छा मौका है, अमृत महोत्सव का वर्ष है, कि हम अपने नेशन बिल्डिंग की तरफ एक नई दृष्टि से देखना ज़रूरी है और एक नई दृष्टि हमें युवा वर्ग को देना ज़रूरी है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। कई चीज़ें हमने, ये जो प्रयास है, ये हमारा जो एक बड़ा अभियान है, उसको जब हमने बड़ा अच्छा नाम दिया है, अच्छाई का अभियान, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी। और जो मराठी यहाँ हैं उनके लिए हमने, उनको शायद पता है, चांगुलपणाची चळवळ वी कॉल इट। द होल आइडिया इज टू क्रिएट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एंड कंपैशन। इफ वन ऑफ दिस इज मिसिंग, one of these C is missing, we cannot really go to the ultimate aim of building a nation that is strong enough to sustain any pressures and pulls that we face in the modern world. Particularly the way technology is changing our lives, most of us actually do not even understand. There are challenges to every sphere. Democracy itself is being challenged by technology, you will see that. Dictatorships are certainly challenged, but democracies are also challenged. So this kind of a world, which is really, I would say, magnificently changed in last 10-15 years, needs a new kind of vision that has to be based on, scientific approach, constructive approach, where actually Vasudhaiva Kutumbakam, or the whole world is our family, can be actually implemented. If I have to really implement as an individual Vasudhaiva Kutumbakam, what exactly is required for me? What exactly is required for my country, society? And can we really build the corresponding institutions and the thought processes in that nation building process? That is a challenge that is there for my young friends who are here, who wanting to be IAS. The whole, the whole civil service as such, those who are in and out, it's being challenged with new things that are coming. On one side, we are actually going, towards moon, Chandrayaan. On the other hand, my river, where I played as a child, it's contaminated for last 20 years. A lot of money has gone into it, but I don't know. I don't see the river changing. I can't go and swim in my own river now. So there is this disjointedness that we have brought in our society, contradictions that we have built in the society. And I think it's a great opportunity. 75th year, our Prime Minister actually personally has put a lot of zeal into it. He wants every department, every section to celebrate it. But just celebrating, we need to go beyond that and use this opportunity. I think Prime Minister also expects us to do that, to introspect and see how we change. So here is an effort of ours, those who cannot afford. I have studied a lot about UPSC, what is the structure, etc., but I'll not go into that. But what I have seen is a large number of these candidates who come here who do not have enough means and resources. So that's why we started online classes. 400 students last year took benefit from Sangli, Satara, Kolhapur, really Pune, Nashik, in this area. Just now, some of the names were mentioned. They all studied for 3 months, the entire process, preliminary exam and main exam and the personality test, how to do this, about 400. Subsequently, we are today here to actually see some of these beneficiaries also, because we think that the first year, those who come to Delhi for studying, they minimum have to spend 5 to 7 lakhs. And a major part of that expenses is these books and the study material. So we have chosen 5 topics here.
We have politics, geography, science, history, and one more topic. So 5 books, comprehensive information in that. It will be really, really useful to everyone. And this whole thing is part of what we call movement of positivity. It has a number of verticals. For example, one vertical talks about helping distressed Indians overseas. We do not want to see any distressed Indians overseas. So we're working, and we've got about 20 advisors working in more than 20 countries. We also are in the planning stage for the Institute of Positivity, which will try to see and build a new vision for our yuva work, for our youth in future. We also have grassroots activities, like I have personally adopted 2 villages in Maharashtra. The idea is let everyone get into the process of nation building. So that is where this evening starts. And I think what a better muhurat than Vasant Panchami and Saraswati Pujan. Let's really bring a new thought in our daily life in terms of building nation, building society on the 3 pillars of creativity, constructive approach, and compassion. Thank you very much for joining today. And I really wish all the best. Those who are aspirants, all the best. It's tough, but maybe you will emerge, like a phoenix after sacrificing yourself and your valuable years. All the best. Thank you so much. Thank you so much, sir. Well, thank you so much, sir. It was lovely, lovely having you here. Thank you. Okay, now, ladies and gentlemen, we move on to our special dignitaries present here. And I'd like to request and call upon the lady here on the dais. But before I call her, I'd like to speak. I'd like to talk about her. Okay, so she's an IRS, I beg your pardon, IRS officer of the 1987 batch and is currently Principal Director General of Income Tax Legal and Research at Delhi. Ladies and gentlemen, apart from various positions in the Income Tax Department, she's worked on deputation in the Central Ministries of Health, Home Affairs, Parliamentary Affairs, Overseas Indian Affairs and Civil Aviation as an advisor in the Competition Commission of India. She's a prolific author and blogger. She has authored 5 books and been published in national and international newspapers, including the Times of India, Hindustan Times, Hindu, Indian Express, and the International Herald Tribune. She has a monthly column in Dainik Bhaskar newspaper. Ladies and gentlemen, she has also been active on Doordarshan, where she scripted and anchored various programs apart from playing the lead role in TV dramas. All right? So without any further ado, I'd like to call upon Dr. Sadhna Shanker, IRS Principal Director General, Legal and Research, to kindly join us here. Warm welcome, ma'am, once again. थैंक यू वानी. नमस्कार माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी और मंच पर आसीन अन्य विशिष्ट अतिथि, माय कॉलीग्स अंकुर एंड पीयूष हु आर देयर इन द ऑडियंस. सबसे पहले तो मैं भी थोड़ा हिंदी में ही बोलूँगी क्योंकि सब वक्ता जो हैं हिंदी में बोल रहे हैं और जो मेरे जो एस्पिरेंट्स हैं सो टू से, मेरी जो टॉक है जो मिस्टर मुले बोले अभी वो काफ़ी मैक्रो बोले, जो थोड़ा सा समय है उस पर मैं थोड़ा माइक्रो इश्यूज़ पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगी. और मेरा सारा जो संबोधन है वो आप लोगों के लिए है जो खड़े हुए हैं और जो किताबों के शायद जिनको मिल गई है या उनको इंतज़ार है किताबों का. आप में से कितने लोगों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है? My God, very few of you, huh? So the rest of you all are repeat, not offenders, but repeat appearers, right? So please tell me, all of you who are appearing again, आप में से कितने लोगों का कोई प्लान बी है? प्लान बी समझते हैं आप कि आपका आप कोई ऐसा कोर्स परस्यू कर रहे हैं जो आपको जॉब देगा या आप जॉब कर रहे हैं, कितनों का एक प्लान बी है? 1 2 3 4 5 6 7.
मतलब 7, 8, 9, सो मतलब आई थिंक यहाँ 31 लोग हैं, सो प्रतिशत मेरे लिए कम, मेरी मैथ्स थोड़ी गड़बड़ है डिस्पाइट बीइंग इन द इनकम टैक्स, बट 30 में से 10 लोग तो थोड़ा कम नहीं लगता आप लोगों को? आप लोग सब जानते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत ही अनसर्टन है, इसको बनाना पील एग्ज़ाम कहना बिल्कुल सही होगा कि कब आप फिसल जाएं, कितना भी प्रिपरेशन हो आपको नहीं पता। और ये मैं अपने 87 के अनुभव से नहीं कह रही हूँ, मेरी बेटी ने अभी ये इम्तहान दिया 4 साल, ठीक है, तो मैं इसकी वोटरी नहीं हूँ कि कोई अपनी जो सब अटेम्प्ट्स में पूरी अपनी यंग लाइफ अटेम्प्ट देने, वो निकल गई, फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ली, वो उसकी मेहनत और मुकद्दर दोनों की बात है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, बट उसके एक्सपीरियंस से मैंने सीखा कि ये एग्ज़ाम, एक तो आप सब जो बैठ रहे हैं, जो बैठ चुके हैं, ये एग्ज़ाम बहुत अनसर्टन है। आप यू कैन बी द बेस्ट स्टूडेंट, द मोस्ट हार्ड वर्किंग, यू कैन हैव द बेस्ट नोट्स, बट देर इज़ जस्ट नो सर्टनिटी। सो इसका जो चीज़ जो आप इतना चाहते हैं और जो इतनी अनसर्टन है, उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प होना है। इसमें व्यक्ति की, बच्चों की, यंग पीपल की जो सेल्फ एस्टीम है ना, वो इस तरह घूमती है। जब आप एग्ज़ाम देते हैं, आप प्रीलिम्स में निकल गए, मेंस में निकल गए, इंटरव्यू तक पहुंच गए, लेकिन आपका नाम लिस्ट में नहीं है, अगले साल आप प्रीलिम्स में ही नहीं आए। सो ये जो एग्ज़ाम है अनसर्टन है और आपकी सेल्फ एस्टीम को बहुत धक्के देता है। इसीलिए इस एग्ज़ाम के लिए एक प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर मुले ने अभी कहा कि ये 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हम लोग सब, हमारा डिपार्टमेंट भी इसको बहुत रौनक से मना रहा है कि ये समय है सोचने का कि हम लोग अपने देश के राष्ट्र निर्माण में को किस तरह और कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू ऑल्सो ऐड हियर कि आप लोग सब ये ध्यान में रखिए कि सिविल सर्विस एज ए करियर बहुत चेंज हो रहा है। मैं अभी एक सर्विंग ऑफिसर हूँ, बहुत दिन नहीं रहूँगी लेकिन अभी हूँ। लेट मी टेल यू कि हर विभाग इतना बदल रहा है। जैसे हमारा ही विभाग है इनकम टैक्स, जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारे कमरे में कंप्यूटर था ही नहीं, और आज लेट मी टेल यू हर प्रोसेस, वेदर इट इज़, आप लोग तो करदाता हैं, काफ़ी लोग करदाता हैं, आप लोग तो रिटर्न ऑनलाइन फाइल करते हैं, लेकिन हम जो इधर बैठे हैं कुर्सी के, हर एक प्रोसेस, जो वो इतना मोटा एक्ट है इनकम टैक्स का, हर वो प्रोसेस अब ऑनलाइन हो गई है। तो हम सबको अपने आप को हर स्टेज पे रीस्किल, अपस्किल, जाने कौन सी स्किल करनी पड़ रही है, यू नो। सो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, द करियर पाथ, आप लोगों ने सुना होगा लैटरल एंट्री हो रही है, डिपार्टमेंट्स का मर्जर हो रहा है। जैसे पिछले 4 साल से आई एम टोल्ड कि रेलवेज में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है जब से मर्जर हुआ है। तो जो पहले का ज़माना था सिविल सर्विस का, उसमें काम करने का जो ढंग था, वो सब बहुत बदल रहा है। और ये चेंज ऐसा है कि आप भी, आई होप ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग आर सक्सेसफुल, मोस्ट ऑफ यू आर सक्सेसफुल, बट द टाइम वेयर यू गॉट इन टू अ सर्विस एंड यू अराइव्ड कि बस अब ज़िंदगी बन गई, वो समय चला गया। आपको हर 5 साल 10 साल पे अपने आप को रीस्किल करना पड़ेगा, नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक आई एंड विद दिस कि एक स्टडी है, आई फॉरगेट कि ILO की है कि वर्ल्ड बैंक की है, पिछले 1-2 साल में हुई थी। मैं हर जगह इसको जब मैं यंग लोगों को संबोधित करती हूँ वो कहती है कि अगले 30 इयर्स में इतनी जॉब में चेंजेस होंगे बिकॉज ऑफ AI एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग सब जानते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में एटलीस्ट 3 स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, नॉट साइमल्टेनियसली, लॉजिकली। 10 साल आप X हैं, उसके 10 साल आपको सीख के Y बनना पड़ेगा, उसके बाद आपको Z बनना पड़ेगा। आप अगर सिविल सर्विस में भी होंगे, लेट मी टेल यू कि यही होने वाला है। सो वो जो टाइम था व्हेन द जॉब वाज फॉर लाइफ, पेंशन अब मिलती नहीं है, मैं डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ, जो कई चीज़ें शायद आपको नहीं, पेंशनेबल जॉब नहीं रहा है। It is the working is getting completely automated, very different. You will have to really develop अपने कंप्यूटर स्किल्स, आप चाहे किसी भी ओहदे पे पहुंच जाए। आज मुझे भी बैठ के अपनी ऑफिस की फाइलें खुद करनी पड़ती हैं और सीखना पड़ा मुझे ऑफिस पूरा अपने आप को फंक्शनल बनाने के लिए। तो जो चैलेंजेस हैं आपके लिए बहुत डिफरेंट हैं। तो my only advice is please all of you who are sitting, have a plan B.
ज़िंदगी में यूपीएससी करना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो भी सिविल सर्विस भी बहुत बदल रही है। तो एक प्लान बी रखिए, वो आपको इम्तहान में भी फ़ायदा देगा, क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम को धक्का लेने की आदत पड़ेगी। Having said all of this, all the best. And yes, before I forget, congratulations to Kiran Publications for doing this, and to the Movement of Positivity for thinking of all of you and publishing books and providing you knowledge which is easily accessible. Thank you very much. We move on to the next special dignitary present here, ladies and gentlemen. I like to call upon this personality sitting here amongst all of us. He's the member, National Consumer Disputes Redressal Commission. Ladies and gentlemen, MBBS and MD Pathology from Dr. VM Government Medical College, Solapur, and PhD in Law from National Law School of India, University, Bangalore. Since 1989, he started his professional career with a high-tech diagnostic lab in Shimoga as a consultant pathologist. During 2006 to 2013, served at Shimoga Institute of Medical Sciences, Government of Karnataka, as Assistant Associate Professor in Department of Pathology. So ladies and gentlemen, let's put our hands together and welcome Honorable Dr. S.M. Kantikar. A very, very warm welcome, sir. Good evening, everyone. The distinguished guests on the dais, of the dais, the students. Students means IAS, the UPSC aspirants. My Marathi friends. Just I asked Mulay sir ki, can I talk in Marathi? He told me, no, there is a, you have to, and जावड़ेकर जी भी महाराष्ट्रीयन है, मुझे लगा मराठी में बोलेंगे. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा हिंदी में ही बात करने की. Today I am really thrilled to see this gathering. Where is this is the noble profession, noble cause which Dr. Mulay took. I am here for last 8 years and I am associated, or I will not tell I am associated, but Dr. Mulay gave me opportunity to involve in his all social works. I think you all are aware, for the IAS aspirants, after passing, at the time of interview, every state conducts mock interviews. And the Pudche Paul is our Maharashtra's people, they conduct all the officers in the different field, they join and they help the aspirants also. Today, certainly the cost of education is more. The student who is coming, the aspirant who is coming from the other state to Delhi is certainly expensive. And to help those really deserving candidates and needy candidates, today's program, this Kiran Institute, the Kiran publication with the association of Dr. Mulay, then Prasad ji or Rajat Kapoor, what I feel, they are the three pillars who will certainly help to bring good candidates and good guidance to the UPSC aspirants. Today is a very auspicious day. Hundreds of messages, I think everyone got the hundreds of messages on Saraswati. So I will take this opportunity to remind and remember my area, because after my graduation I shifted Shimoga, and you may be aware, near Shimoga there is one Sringeri.
So I remembered Sringeri because when the child, the parents, they put the child in the, before the school, when the child wants to enter in the school, LKG or something, that time parents take the child to Sringeri Sharda. Sharda means Saraswati. In that temple, and they used to give a slate and write before the goddess. This is the puja. So I remember that, and I felt Dr. Mulay, he is trying to bring up entire student population to the main fora, because I agree, madam also told IAS is very tough. I too tried during my, after graduation, but just as a casually took. But you have to work hard, because everyone is selected, everyone is competitive. Your thought, your aim should be how I will be next. I will be more than my competitor. This is a competition. Everyone is succeeded, but the selection is very few. So you modify your study schedule. I think you have some, you take the notes, because I am not familiar with, but this today's program, I think it will give you one way for the success. I wish everyone here, the freshers and those who are taking 2 or 3 times exam, for grand success. And with this note, I thank you the organizers, thank you. Let's have a big round of applause for Dr. Kantikar. Thank you so much. It was lovely having you here. Okay, तो अगले जो गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी, तो एक बार फिर से उनको बुलाने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगी आप सभी लोगों को. Ladies and gentlemen, he has an illustrious academic and professional record. He qualified his LLB from Punjab University, Patiala in 1977 and was enrolled as an advocate in the same year. Ladies and gentlemen, he was elevated as a judge of the Punjab and Haryana High Court at Chandigarh in the year 2001. He has worked as executive chairman, Legal Services Authority, and chairman, Mediation Committee, and held mega Lok Adalats. Ladies and gentlemen, later appointed as Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court in the year 2012. So let us put our hands together and welcome Justice Shri M Kumar. Let's welcome Shri M Kumar, member NHRC. सर एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है. थैंक यू. श्री प्रकाश जावेदकर साहब, चीफ गेस्ट ऑफ today's function, and all other dignitaries on the dais, of the dais, and the young aspirants, whether taking plunge for the first time or the second time or the third time. Ladies and gentlemen, I think it is a great day, auspicious day, which Dr. Mulay has chosen for starting this program. And I believe Goddess Saraswati would bless each one of you to achieve your destination. Before me, a young boy came on the dais and he narrated his story, tragic story. I was reminded of another young IAS officer. Probably he is in UP Kadar these days. She
with her 4 family members, used to live in a very dilapidated condition, in very dilapidated building. Her father, her mother, and 3 sisters were involved in mica mining. One by one, all of them lost their lives because of one reason or the other connected with mining. Somehow this girl saved. She was addressing a gathering after she qualified civil services. She was posted as a deputy commissioner. She was addressing a gathering. One press reporter asked her, "Madam, you don't use any makeup? No powder?" She said, "Okay, today I will tell you why." And she told the audience there that don't expect me to use powder because I lost 4 of my family members digging mica, which is used for making powder. So this is this focus which comes from those who face tragical situations. The concentration which comes, I think, is unparalleled. And they are resolutely determined to change their own destiny and the destiny of the society. When I compare these type of youngsters who have made achievements with those who are very affluent, very well-to-do, I will give you one example. I was working as a Chief Justice in Jammu and Kashmir. There is a organization called Board of Professional Entrance Examination, popularly known as BOPI. It has a chairman with the name of Mr. Peer Jada. When the admission to MD, MBBS classes took place, in the first prof of the MBBS, students started failing very little marks, and results were 45%, 50%. The reason? They were able to qualify entrance examination either in MD or in MS or in MBBS by paying money. Those students who have 80%, 90%, they could not take admission because they could not qualify the exam. And those who took admission, they were 60%, 65%. So a public interest litigation was filed before me when I found that there are allegations against the chairperson, Mr. Peer Jada. I ordered recording of an FIR. Then this man was not being arrested. He was then strict action on the part of the bench. He was arrested. And the type of money, the property which was revealed, amazing. And there were attempts by those who had 90% to commit suicide. So compare the situation with those who have such affluence and they get admission by using those extra means. And here is a program by Dr. Mulay to encourage those who can work hard. And in Jammu and Kashmir, I seen naked corruption. Some money, crores of rupees were sent to help those who were victim of earthquake, children and women. And you will be surprised, the director of social welfare got the amount deposited in his personal account
and purchase land next to his house with that money. I have to take very strict action. So friends, those who would be able to qualify, make a mission that you have to eradicate the evils from society, every type of evil. You are focused people. Dr. Mulay has unrolled a program to attract those who are talented, focused, and can, like a good player, can put the ball into the goal. Dr. Mulay is trying to identify those. Otherwise, if you go to Rajendra Nagar, where the concentration of the aspirants is there, the academies, the type of fees they charge, I have some idea. So friends, today, any one of you, anyone sitting here, if he is able to contribute in eradication of evils from the society, the evils of corruption, which is eating into the vitals of our society, if we are able to get rid of that, I think it will be a great service to the society. I also wish to support the idea of Plan B. I will tell you a small story. When I was to get married, my would-be father-in-law came and asked, "What the boy do?" My brother told him that he is an advocate. Oh, भाई advocate तो ठीक है, काम क्या करता है? So Plan B should always be there. Plan B should always be there. With these few words, I wish to greet Dr. Mulay, Mr. Rajat Kapoor, Mr. Prasad of Kiran publication for this initiative, and I will like to support every initiative of this nature. Thank you so much. बहुत ही अच्छा लगा सर आपकी बातें सुनकर. लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन फॉर श्री एम कुमार सर. प्लान भी होना जरूरी है, बहुत ही सही कहा सर ने. Okay, now ladies and gentlemen, it's time to watch our guest of honor because he's not here, he's not joined us here at this event. So we have a special video from Shri V. Muraleedharan, Minister of State for External Affairs. जोरदार तालियां बजाते हैं उनके लिए और देखते हैं स्पेशल वीडियो को. Shri Prakash Javadekar ji, Member of Parliament and former Union Minister for Information and Broadcasting, Environment and Heavy Industries, Dr. Dnyaneshwar Mulay, Member NHRC, Justice Shri M Kumar, Member NHRC, Dr. Sadhna Shanker, Principal Director General, Department of Income Tax, Shri Rajat Kapoor, MD, Indian Diaspora Club, Shri Sanket Saha, Director, Kiran Institute of Career Excellence Private Limited, distinguished guests, faculties and students, Namaskaram and a very good evening to all of you. It's my great pleasure to join you all at the launch of study material for Civil Services Examination. I appreciate and recognize all those who have been involved in preparing the materials and who have been mentoring civil services aspirants. I can easily say without an iota of doubt that civil services examination is one of the toughest in the world. From around 6 lakh candidates appearing every year, only 800 brightest minds are selected for the civil services. The selection process, or rather the filtering mechanism, is so rigorous and meticulous. What comes out as a result is polished minds to serve this great nation. I note that the preparation has seen a sea change over the years. Some 20 years ago, before widespread internet access, the awareness for taking civil services examination was very low. It concentrated only in the urban areas and big towns. Over the years, thanks to media, internet,
the awareness and interest of students, even in remotest villages, has increased. It's now no more urban specific. I can see a lot of students clearing examination from financially backward, differently abled, daughters of farmers, workers, and from remote corners of India. It's a good sign. With enormous amount of materials and information available in internet, there is always an issue of problem of plenty. I keep hearing from some aspirants that they do not know how to select information from internet or how to choose study materials. Efforts like bringing together a compendium of information to help students to prepare in an effective manner are very helpful. We have been facing the unprecedented challenges of COVID during the last 2 years. I understand that the medium for preparation has become online. This helps wider reach, and the aspirants are increasingly adapting to the new realities. Friends, as we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, the coming 25 years of Amrit Kal is very important for India and thus to the world. The government, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, has been undertaking far-reaching reforms, archiving old laws to bring in positive changes on the lives of common people. Civil servants, in the words of Sri Vallabhbhai Patel, as the steel frame of India, would have to shoulder greater responsibilities to take our nation forward. I am particularly confident of the capabilities of youth of today. They have conviction, positive attitude, and willingness to stand up to the occasion. They are change makers and have a lot of opportunities in front of them to bring smiles on everyone's life. Civil service is a unique and good avenue for the youth. Friends, I am happy to note that 400 students across various colleges of Maharashtra have already been provided with free coaching classes, and free books will be provided to these students by Indian Diaspora Club, Kiran Institute of Career Excellence Private Limited. The efforts and initiatives like this will surely enhance and help aspirants of civil services to prepare for examination more effectively. I personally believe that successful preparation would entail proper guidance, consistent effort, dedication, innovative approach, and positive attitude. Outcomes depend on the combination of these parameters. In conclusion, I extend my wishes for this initiative and to all those who are involved. Thank you. Hands together and welcome Shri Prakash Javadekar, sir. Dnyaneshwar Mulay, जस्टिस कुमार, मंच पर सभी मान्यवर भाइयों एवं बहनों, पहले तो आप सबको बधाई दूंगा कि मुळे सर ने जो कहा कि 10 लाख में 1000 होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि आज जो कार्यक्रम में आए हैं यहाँ ये रेशो बदलेगा और अच्छे खासे संख्या में अधिकारी बनेंगे। क्योंकि अगर मन में विश्वास ही नहीं है, मन में उमंग ही नहीं है, तो कुछ भी साध्य नहीं होता। मैं राजनीति में हूं, आज तक 50 साल हुए मुझे काम करते हुए, तो इतने चुनाव देखे, आज तक एक भी उम्मीदवार मुझे नहीं मिला कि जो कहता है कि मैं हारूंगा। वो जीतने का जज्बा होना, विश्वास होना खुद पर, ये भी एक बहुत जरूरी है। लेकिन उसी की दूसरी बात भी है कि जैसे मैडम ने कहा प्लान बी क्या है, तो वो अपना अपना तय करना है। कितने दिन प्लान करके जिंदगी में कितना देना है इसके लिए। मैं बैंक में काम करता था,
तो मैं जब ऑफिसर बना, यानी प्रमोशन आया और पत्र आया, तो हम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। तो मेरी पत्नी एमकॉम कर रही थी। 3 दिन हमने विचार किया कि भाई नेशनलाइज बैंक में एट दिस यंग एज आप पहला ऑफिसर बनते हो, आगे जाते 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 बहुत टॉप पोजीशन पे पहुंचोगे, ये निश्चित था। दिस इज ए सिक्योर्ड लाइफ। लेकिन दिल है, पैशन है, तो मुझे तो राजनीति करनी थी। हम अभी अभी जेल से बाहर आए थे इमरजेंसी के खिलाफ लड़कर। तो हमने दोनों ने मिलके 2-3 दिन विचार करके, क्योंकि वो भी जेल में थी, तो वो भी एक्टिव, हाँ अलग अलग होता है। तो हमने प्रैक्टिकल विचार करना होता है ना। उसको भी सारी महिला नेता कह रही थी कि आप राजनीति में आओ। तो हमने पहला निर्णय लिया कि 2 नहीं करेंगे, 1 ही करेगा, क्योंकि घर भी तो चलाना है, बच्चों को अभी ठीक करना है। तो एक घर चलाएगा, एक राजनीति में जाएगा। और उसमें भी कौन करेगा? तो मैं तैयार था। इफ शी वॉन्ट्स टू डू, ओके आई एम रेडी। मैं अच्छा हाउस हस्बैंड बनूंगा और अच्छा काम करूंगा। लेकिन हमने तय किया, फिर मैं यहाँ आया, अब इतने साल काम किया, यहाँ आए। लेकिन मोदी जी एक वाक्य हमेशा कहते हैं, मैं कभी ये नहीं कहता कि अब मैं यहाँ तक ये बन गया, मंत्री बन गया, ऐसा नहीं बोलते हम। क्योंकि हमारे मन में मूल धारणा है कि कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए हमें काम करना है, जिंदगी जीना है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। अब तो कुछ तो बन ही जाओगे। कुछ ये अधिकारी बनेंगे, कुछ बी प्लान के अनुसार बनेंगे, कुछ ऐसे ही बनेंगे। वो 3 इडियट में वो जाता है, वो पहले तो निराश होकर छलांग लगाता है, लेकिन बाद में टूटा फूटा इंटरव्यू में जाता है। तो वो सब देखते हैं उसका फाइल, तो बोले और वो जवाब जिस तरह से देता है तो होपलेस केस लगती है। लेकिन वो कहता है आपकी जो अपेक्षा है और मैं जो हूँ फर्क है, तो आप आपकी नौकरी आपके पास रखिए, मेरी फाइल मुझे दे दीजिए, कुछ तो बन ही जाऊंगा, ऐसा वो कहता है। तो कुछ तो बन ही जाते हैं और बनेंगे सभी, लेकिन मन में चाहिए। लेकिन जहां भी काम करोगे, अधिकारी जहां भी बनोगे, सबसे पहला है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर पब्लिक सर्वेंट। हमारा पैसा, तनख्वाह लोग देते हैं, गरीब आदमी देता है, उसका ख्याल करना है। कल मैंने न्यूज़ पढ़ी कि डॉक्टर्स कोई स्ट्राइक कर रहे हैं मुंबई में। एक IAS अधिकारी के पास गए, सेक्रेटरी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, उसने उनको गेट आउट, ये वो क्या क्या गालियां दी, उसके कारण स्ट्राइक हुआ। यानी मैं अगर वहां निर्णय करने वाला होता तो मैं तुरंत उसको सस्पेंड करता। क्योंकि आप इसलिए नहीं है, आपको ये देखो लोग आपके पास क्यों आते हैं। कुछ समय नहीं जा रहा है इसलिए आपके पास मिलने के लिए थोड़ा ही कोई आएगा, वो पिक्चर देखेगा। लेकिन वो आता है क्योंकि उसका कुछ काम है जो अटका है। आपके पास आता है क्योंकि उसके कोई डिफिकल्टी है, तो हम उससे उसी तरह से पेश आना चाहिए
The best officer is that person only who is a good human being himself. अच्छा आदमी होना ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको ही पूछता हूं, जरा याद करिए, आपको इतने सालों के बाद कौन से टीचर आपको अब अच्छे लगते हैं, स्कूल के हो या कॉलेज के हो? कौन टीचर आज भी कहते ही मैंने जैसे प्रश्न पूछा तो आपके मन में 2-3 नाम तुरंत आए होंगे? उसका विश्लेषण करो। जो आप में इंटरेस्ट लेते थे, जो आपको सही गाइडेंस करते थे, अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाने के सिवाय भी एक ह्यूमन बीइंग अच्छे थे, तो वही आपको अच्छे लगते हैं, याद आते हैं। तो ये हमें गुड ह्यूमन बीइंग होना है। किसी भी नौकरी का अब 21वीं सदी में तो एक ही नियम है कि रोज आपको सीखना पड़ता है। मैडम ने कहा कि मुझे ई-फाइल सारा करने के लिए सीखना पड़ा, रोज सीखना ही पड़ता है। और वो सीखना इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, और आनंद आता है। मैं आज मुळे जी और नवनीत नहीं, क्या है ये, किरण पब्लिकेशन, इन दोनों ने जो आयोजित किया वो बहुत अच्छा है स्टडी मटेरियल। लेकिन मैंने देखा, अब मेरा तो एक अलग इम्प्रेशन है, मैंने इनको बताया, लेकिन वो बोले ये सिलेबस जैसा ही है, जो सिलेबस है वैसा ही ये बुक है। तो अब मुझे सिलेबस ही देखना पड़ेगा। मैं तो अब जरा IAS के मूल ट्रेनिंग के इसमें ही जाऊंगा, क्या करते हैं। लेकिन रोज सीखना है। कुछ भी बनने पर शिक्षा में मदद करो। दुनिया में शिक्षा जितना एम्पावरमेंट कुछ भी नहीं है। अभी जिसने कहा कि जिन विपरीत परिस्थितियों में स्टूडेंट्स आते, आप में से बहुत लोगों ने वो काम किया होगा, तो कोई ना कोई शिक्षा में मदद करता है, उसका बड़ा महत्व है। एक मैं हर साल कुछ न कुछ छात्रों को मदद करता हूँ। एक छात्र था, उसकी माँ खेतिहर मजदूर थी, लेकिन वो बोर्ड में टॉप किया, उसको मेडिकल में एडमिशन मिली। अब वो शेड्यूल ट्राइब था या क्या था, तो उसके कारण उसको फ्री हॉस्टल था, फ्री एजुकेशन था, ये था, सब था। लेकिन फिर भी कुछ पैसे लगते हैं कि नहीं? तो साल में कुछ पैसे जो लगते हैं वो मैंने देता। तो वो हमारे घर आता था। मेरे बच्चे भी उस समय कॉलेज वगैरह में ही थे, तो उनकी दोस्ती भी हो गई थी। तो एक दिन वो बाहर गए घूमने, तो मेडिकल कर रहा है लड़का, और हमारे बेटे ने पूछा, आइसक्रीम की दुकान में गया एक, और उसने कहा आप क्या फ्लेवर लोगे? बोले मैंने आज तक आइसक्रीम ही नहीं खाया है। समाज की ये भी स्थिति है, हमें समझना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि शिक्षा में मदद करने का संकल्प करना ही चाहिए, जितना हो करना है मदद लोगों को, क्योंकि दैट इज एम्पावरमेंट। एक खेतिहर मजदूर की बेटी उसी जिला में अगर जिलाधिकारी बनती है, तो उसका सामर्थ्य केवल शिक्षा का है, दूसरा किसी भी चीज का नहीं। इसलिए नथिंग इज बिगर देन हेल्पिंग गुड स्टूडेंट्स टू गेट फर्दर एजुकेशन। एक ऐसा ही विचार मन में आया, वो आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि ये बड़ा एक तरह से इनफॉर्मल कार्यक्रम है, लेकिन आप भी उस मूड में हो। भारत को बदला किसने? दुनिया को बदला किसने? इसका उत्तर आप सब लोग माफ करेंगे मुझे, अधिकारी नहीं बदलते, ये दूसरे लोगों ने बदला। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई, स्वामीनाथन जी थे। मिल्क हम पाउडर बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज दुनिया का सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हम करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, कुरियन ने किया।
टेलीकॉम के स्विचेस नहीं होते थे हमारे पास, वो स्विच की टेक्नोलॉजी सैम पिट्रोडा ने लाई। उन्होंने देश में नया युग लाया। सैटेलाइट हमारे सबसे लाडले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने किया। आज भारत एटॉमिक एनर्जी में भी और एटॉम बम भी, एटॉमिक पावर भी, दोनों तरह की। डॉक्टर होमी भाभा है, एक भी IAS अधिकारी नहीं था। ऐसा है, आप सबके सामने ये वाक्य मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं उल्टा मानता हूं कि अधिकारी की फिर भूमिका क्या होती है कि नया कुछ कर रहे उनको प्रोत्साहन देना, उनको मदद करना। अब मेरा लास्ट मुद्दा एक छोटा है कि देखो दुनिया बदल गई। मैं 98 में महाराष्ट्र के IT टास्क फोर्स का चेयरमैन था। तब मैं अमेरिका में गया था। हम स्टीव जॉब्स 2 दिन हमें प्रेजेंटेशन दिखाई दिए। 98 में आईफोन नहीं था, तो वो ऐसा बता रहा था कि ये मैं हैंडहेल्ड तैयार कर रहा हूँ, इतने इतने फीचर्स होंगे उसमें। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँगा ये ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन आज लोग ऐसा देख कर चलते हैं, कल से ऐसा देख कर चलेंगे। और हुआ, हमने देखा है, जिंदगी बदल गई। ये जो नया ज्ञान है उसके आधार पर जो नई इंडस्ट्रीज है, नई इनिशिएटिव्स है। कल मैं अमेज़ॉन में कुछ न कुछ रोज एक 50 मिनट का अच्छा डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, इतना समय निकालता हूँ। तो अमेज़ॉन कैसे हुआ, बेजोस की कहानी बहुत अच्छी है, प्रेरणादायी है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, सबकी कहानियां ऐसी है। अपने रोज के जिंदगी में जिन्होंने बदलाव लाया, जोमेटो, स्विगी, बुक माई शो, इतना ही क्यों, मैकडोनाल्ड, आखिर वड़ा पाव ही है ना, क्या है दूसरा, पैटी है, ब्रेड है, थोड़ा बाकी सैलेड है, चीज है। वड़ा पाव का, लेकिन वो भी स्टोरी देखने लायक है। 50 मिनट का ही वो डॉक्यूमेंट्री है कि वो 2 भाई थे, बहुत डिसिप्लिन से करते थे, वो एकदम क्वालिटी उनकी वैसे की वैसी सालों साल आती थी। लेकिन एक उनको मार्केटिंग वाला आदमी मिला, वो पार्टनर हुआ, आगे वो मालिक बना, उसने इनको पैसा बहुत दे दिया, शेयर भी दे रखा, और उसने ये सब जगह जाना चाहिए। क्योंकि ये क्या करते थे, वो थोड़े ही दुकान उनके, और जैसे हर यात्रा कुछ होती है तो आठवडी बाजार आपल्याकडे होतो, त्याच्यात जसं इकडे जायचं मग तिकडे जायचं, तिकडे जायचं, असं नाही केलं ते। आणि त्यांनी काढले, आता 40,000 पेक्षा जास्त दुकानं झाली, एकच स्टँडर्डायझेशन। अहो आता महाराष्ट्रात सुद्धा म्हणजे मला नवी नवी मुलं इतकी उत्साहाने करतात काम। मी पाहिलं येवले चहा, त्याच्या आता शाखा निघायला लागल्या। दूसरा एक मैंने दुकान देखा, 15 प्रकार के चाय। ऐसा बहुत कुछ होता है। तो उद्योजकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मन में 2 ही निर्णय चाहिए, एक मन साफ चाहिए, दूसरे के लिए एक कंपैशन केवल नहीं, एक उसमें विश्वास, और उससे ज़्यादा उसके प्रतिष्ठा का आदर करने की आदत होनी चाहिए। उसको भी प्रतिष्ठा है, गरीब हो तो भी क्या हुआ, सम्मान से व्यवहार करो, अच्छे इंसान बनो, रोज अध्ययन करो, और नए नए क्या हो रहा है दुनिया में, हम मेरी पैशन कहाँ है ये समझने को भी कभी कभी समय लगता है। वो पैशन समझेंगे तो मुझे लगता है आप एवरीबडी विल बी IAS,
civil servant, or some very successful person in life. Thank you. All the best. माननीय मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं. एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं उनके लिए. Thank you so much, sir. Okay, now, ladies and gentlemen, I'd like to call upon, for the vote of thanks, I'd like to call upon Shri Sanket Shah, Director, Kiran Institute of Career Excellence. And before he comes, I'd like to quickly talk about you. After completing his CA, Mr. Sanket Shah joined the family publication business. Under his young and dynamic leadership, the family business scaled to new heights. Currently, he is steering the skies to new heights through his innovative thinking, quality curricular and content design, adoption of quality control at all levels, reaching out to the poorest and student community. So, ladies and gentlemen, put your hands together because we welcome Mr. Sanket Shah. A very good evening to all. I am glad to be standing here to express my vote of thanks. It's a matter of pride for me. A special thanks to our chief guest and guest of honor for accepting our invitation and for being here with us today to grace this occasion. I would further extend hearty thanks to our special dignitaries and guests. I would take this opportunity to convey my deep regards to Dr. Dnyaneshwar Mulay sir for showing us the way to be a part of this noble cause. He is a constant motivator and guiding force in all our endeavors. I would especially thank Mr. Rajat Kapoor ji for his unstinted support throughout this initiative. My heartfelt thanks to the team of Kiran Publications for their valuable contribution. I thank members of the media present here. A wide round of applause and thanks to all the young aspirants who made this occasion a memorable one. Last but not the least, I thank my father, my mentor, Shri S.N. Prasad ji, who has guided us all the time. Finally, I would like to thank all of you present here today and make this occasion a grand success. Thank you, Vani, for hosting this event successfully. Thank you all. Okay, so ladies and gentlemen, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद. एक बार मैं चाहूँगी आप सभी लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं. आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाला आज यहाँ आए. माननीय मंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ आए अपना समय निकाल के. I'd like to thank all the dignitaries present here. I'd like to thank Indian Diaspora Club. I'd like to thank Kiran Institute of Career Excellence. And of course, Dr. Mulay for giving me an opportunity to be a part of this absolutely grandeur evening. Everybody, I'd like to thank the media present here, the press, of course, present here. तो जोरदार तालियां बजाते हैं सभी के लिए. Thank you. Have a great day ahead, great evening, in fact. Have a sound sleep and keep smiling, everybody. Thank you. And of course, dinner is ready. तो आप सभी लोग अपना dinner भी enjoy कर सकते हैं. Thank you so much.